हाँ बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमने स्टैट्स कंप्लीट कर लिया था इन द मॉर्निंग। किसी ने क्वेश्चंस ट्राई किए? कोई डाउट है? मेरी वॉइस ऑडिबल है ना सबको? हाँ सर, ऑडिबल है। ओके, सो टाइम मिला आपको? ट्राई किए क्वेश्चंस? आई गेस नहीं आया और भी सब्जेक्ट्स है। ठीक है फिर जितना मैंने आपको करवाया है उसमें आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद अगर डाउट आता है तो प्लीज बताइएगा। ठीक, फिर आपके डाउट्स हम देख लेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, तो हमारा स्टार्ट्स हो गया, लिमिट्स हो गया, कोनिक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है एंड इन इट वी आर डूइंग द स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में कुछ आपके सेम फॉर्मूलेज हैं जो 10th में थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू 11th टॉपिक। सो फर्स्ट योर फॉर्मूला इज डिस्टेंस फॉर्मूला। Distance formula. So suppose you have 2 points P, which is x1, y1, and you have another point Q, which is x2, y2. Find PQ, which is what? Under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square. Okay. So we have a 2 point. We have to find the distance between these 2 points. So our formula is x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इसके बेस पे हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि 10th में आप कर चुके हैं, ये 10th का ही टॉपिक है। 11th की जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें कहीं यूज आएगा, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। बट अगर आपको डाउट है कोई, प्लीज टेल मी, फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वी हैव अ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? You have 2 points. This is P and this one is Q. P have the coordinate x1 comma y1. Q have the coordinate x2 comma y2. And you join these 2 points. Suppose there is a point R which divide this complete line in the ratio of m is to n, and R have the coordinate x comma y. So इसमें 2 parts होते हैं हमारे internally. अगर ये point internally lie कर रहे हैं and we have to find the coordinate, then x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, and we have y is equal to my2 plus ny1 by m plus n. So this is the formula to find the coordinate of a point R which divides this PQ internally. Second exam में अगर आपके पास आता है externally, तो externally में same formula use करना है, just you have to mark the minus nx1, सिर्फ आपको यहाँ नेगेटिव कर देना है, y is equal to my2 minus ny1 by m minus। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पॉजिटिव था, आपने फिर नेगेटिव कर दिया। एक्सटर्नली। सो ये 2 फॉर्मूलेज हैं, इसको प्लीज नोट कीजिए और अगर डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, मुझे अभी लग रहा है क्योंकि 10th का टॉपिक है आपको आता होगा। प्लीज नोट डाउन दीज 2 फॉर्मूलेज। बच्चे जब कंप्लीट हो जाए तो प्लीज बता दिएगा, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। देखिए टाइम हमारे पास हो गया। ओके, टाइम हमारे पास कम है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करें।
ठीक है, टाइम होता हम काफी डिटेल में करते सेम टॉपिक. नेक्स्ट थर्ड इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. So suppose we have a triangle having the vertex A. Area of triangle is equal to ठीक, is equal to 1/2. उसके बाद x1. ठीक, इसको ऐसे देखा करिए. x1 अगर आपने चूज किया, मूव टू नेक्स्ट. y2 minus y3 plus x2, then y3 minus y1 plus x3, then y1 minus y2. So we have this formula that area of triangle is equal to 1/2 x1 this plus and this one. ठीक है, ये भी आपके 10th का फॉर्मूला था. बट इन दिस फॉर्मूला ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपके पास ये नेगेटिव आ रहा है देन टेक द पॉजिटिव आ. ऑलवेज टेक अ मॉड ऑफ दिस. ठीक है, हमेशा इसका मॉड लिया करिए बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं. इफ 3 points are collinear, if 3 points are collinear, then area of triangle is equal to. ठीक है, अगर 3 points collinear है तो एरिया कितना होगा तो बताएंगे. सर 0. एरिया 0. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. एक कोऑर्डिनेट उसने नहीं दिया आपको और उसने कह दिया पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन यू कैन पुट दिस फार्मूला और आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट होगा x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये जो कंप्लीट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि 1/2 भी हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया. सो वी गेट दिस पार्ट, दिस कंप्लीट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अच्छा 1/2 भी लिख देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में 1/2 वहाँ शिफ्ट हो सकता है या जैसे भी आप कैलकुलेशन करना चाहें. x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 and this is equal to 0. So we have this formula when the 3 points are collinear. Okay, please note down this. So done. Okay. Then हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था x is equal to mx2 plus nx1. ठीक है, हमारे पास suppose we have this line, this is a, this a, and this is b, and this is c. Okay, this is x1 comma y1, x2 comma y2. This is x comma y. If c is the midpoint of it, if c is the midpoint of it, तो मुझे बता सकते हैं what is the coordinate of c then? c का coordinate x2 plus x1 plus x2 by 2. बिल्कुल ठीक है, x1 plus x2 by 2 and similarly we have y which is equal to y1 plus y2 by 2. ठीक है, प्लीज नोट ऑन दिस. ये हो गया हमारा 10th का क्वेश्चन.
अब हम स्टार्ट करते हैं 11th के क्वेश्चन। बच्चे हो गया सबका कंप्लीट? सर एक सेकेंड। ओके सर हो गया। ओके प्रथम स्टार्ट करते हैं। फिर अभी 11 के टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? सपोज वी हैव दिस y axis, this is x axis, this x, this y, this y. Suppose we have a line, and this line is making an angle theta. This line is making an angle theta with positive direction of x axis. देखिए, this is a positive x axis, this is negative x axis. तो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करता है, दैट इज द इंक्लिनेशन। क्लॉक कैसी होती है? क्लॉक इज दिस, क्लॉक कैसे रोटेट करती है? लाइक दिस। तो एंटी क्लॉकवाइज दिस डायरेक्शन। तो अपोजिट जो आपका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो ये। सो व्हाट इज इंक्लिनेशन? द एंगल थीटा व्हिच लाइन मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is called the inclination. Okay? So what is inclination? The angle theta which align the angle theta which align makes with positive x-axis in anti-clockwise direction is called the inclination. It's called the inclination. Okay, so theta is the inclination and this is always greater than equal to 0, less than equal to 180 degree. प्लीज नोट कीजिए। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंप्लीट हुआ सबका? स्टार्ट करें नेक्स्ट। सबका कंप्लीट हो गया? बच्चे अगर हो गया तो बताइए, सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप? इफ दिस इज अ लाइन L, ठीक है, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये इंक्लिनेशन है। then tan of theta is called the slope. So if theta is an
if theta is an inclination of a line, then tan theta is called the slope of a line. It's called the slope of a line. Okay. Let's note on this. If theta inclination है, then tan theta slope होता है. It is denoted by m. ठीक, इसको हम m सिंबल से डिनोट करते हैं. प्लीज नोट कीजिए इसको. बच्चों हो गया नोट. स्टार्ट करें नेक्स्ट. नोट हो गया, स्टार्ट करें. Yes, sir. ओके. सो स्लोप के लिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. इफ line is parallel to x-axis. Line is parallel to x-axis. ठीक, ये आपकी लाइन है. ठीक है. If this line is parallel to x-axis, so it's mean कि अगर हमारे पास like this, and we have this, and we have this. ठीक, this is x, this line L. So line L इसके parallel है, so we can say theta is 0 degree. So we can say m is equal to tan 0 is equal to, what is slope then? Slope is 0. So if a line is parallel to x-axis, then slope is 0. If line is perpendicular to x-axis, if a line is perpendicular to x-axis, then theta is equal to 90 degree. अगर आपकी लाइन जो है, ठीक है, like this, two lines लेते हैं, ये L1 है, this is L2, ये एंगल 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा? tan of 90. This is not 1. tan 90 हो जाएगा, cot 90 0 होता है, tan 90 is 1/0, so this is not defined. Not defined हो जाएगा. इसको जब हमें सॉल्व करना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे? कॉट में चेंज करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चंस में यूज करनी है. उसके बाद इफ थीटा इज एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट है, ठीक है, लाइन लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, लेट दिस बी L3. अगर ये एक्यूट एंगल है, देन tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? देन tan थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव? जी बच्चे, tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कोऑर्डिनेट्स याद है ना? तो नेगेटिव होगा. नो नो, नॉट नेगेटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, अभी ट्रिगो नहीं किया. सो ऑलवेज रिमेंबर, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल trigonometric ratios are positive. So if theta is acute, then tan theta is positive. So m is positive. If theta is obtuse, then tan theta is negative, m is negative.
ठीक है, ऑब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव. So if theta is acute, then tan is positive. It means slope is positive. If theta is obtuse, then tan is negative and slope is negative. ठीक है, तो ये अब आपको याद रहेगा कि if a line is parallel to x-axis, tan 0 हो जाएगा, perpendicular theta 90 हो जाएगा, acute first quadrant आएगा, slope is positive, obtuse slope is negative. Please note down this. और अगर कोई डाउट है मुझे तो प्लीज बताइए. कुछ कंप्लीट हुआ, स्टार्ट करें नेक्स्ट. Yes, sir. ओके, अच्छा स्नेहा सॉरी मैंने आपका मैसेज नहीं देखा. ठीक है, मैं भी बैक कर देता हूँ इसको. सो आई होप सबने नोट कर लिया. इसमें ये फॉर्मूला था एक्सटर्नली का, यहाँ सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाता है. ठीक है, मैंने बस अभी देखा मैसेज. ओके ओके, हाँ नोट कर लिया आपने. स्टार्ट करें नेक्स्ट. ठीक है, इंक्लिनेशन हो गया था, स्लोप हो गया. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ अ लाइन. Slope of a line when two points on the line are given. ठीक है, slope of a line when 2 points on the line are given. So इसमें हम क्या करेंगे, suppose we have a straight line, the x and y axis हो गए. Suppose we have a line this, we have this line. यहाँ हमें given है कि this is x1 y1. Then we have this b, this is x2 y2. ठीक, अब हम क्या करें, we are making a triangle. Okay, this angle is theta. कोई मुझे बता सकता है what is this angle? बिल्कुल ठीक है ना इसमें. These two lines are parallel, so this angle is theta. Okay, this point is y1. ठीक है, this is x1, y1, this is x2, y2. यानी ये जो आपका पार्ट है, this one, ये y1 हो गया, और ये जो आपका पॉइंट है, this one, this is y2. अब मुझे कोई बता सकता है that what is this, ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? So y2 minus y1. y2 minus y1. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. हाँ, ये y2 minus y1 हो गया. अब ये x1 है, तो इसका मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस, ये कितना है, ये बताइए ये कितना है? x1
है ना, this is x2, इसका मतलब ये जो complete distance है to this, ये हो जाएगी x2, so ये part कितना आ जाएगा फिर, ये कितना हो जाएगा, So x2 minus x1. x2 minus x1, इसका मतलब ये जो है this is x2 minus x1 और ये y2 minus y1. Okay, now in this triangle let this be C. In triangle ABC, in triangle ABC, tan theta क्या होगा, perpendicular by base, and what is perpendicular in this case, perpendicular is BC. What is base AC? Now what is BC? y2 minus y1 by x2 minus x1. So इसका मतलब स्लोप जो हमारे पास आ जाएगा m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. So in exam, if you have 2 points and you have to calculate the slope of these two line of a line, then you can use this formula that y2 minus y1 by x2 minus x1. ठीक है, इसको नोट कीजिए और कोई डाउट है बचे तो प्लीज बताइए. सबने नोट कर लिया, क्वेश्चन स्टार्ट करें. Solve this question. Find the slope of the following lines. First is passing through the point, passing through the point -2 and -1, comma 4. Next is making inclination of 60° with the positive direction of x-axis. Okay, try this. स्नेहा बिल्कुल ठीक है आंसर, बट ओनली -3. स्नेहा कुछ और भी आ रहा है. m is equal to y2 minus y1 है ना, 4 plus 2 by x2 minus x1 यानी -3 minus 3 होगा. There's 6 by -4 which is equal to -3 by. स्नेहा बिल्कुल ठीक है आंसर, सेकंड इज करेक्ट.
और सबके आंसर्स गुण प्रथम सेक्शन what is answer गुण बिल्कुल ठीक है आंसर -3/2 and second is √3 प्रथम and section what is answer प्रथम and section what is answer स्टार्ट करें प्रथम and section next सर एक बार ये बता दो, मैं गेट पे कोई आया था वो खोलने गया था, एक बार आप इसको बता दो कैसे करना। okay प्रथम ये फॉर्मूला क्लियर है m is equal to y2 minus y1 by यस सर, 3 फॉर्मूले क्लियर है। okay now in the first part what is y2 y2 in the first part is 4 4 what is y1 -2 2 x2 -1 x1 3 so this is 4 plus 2 uh, 5 minus 4 which is equal to 6 minus 4 which minus is equal minus 3/2 yes sir। this is the first part now what is second theta given है inclination given है आपको what is slope so what's sir? check कीजिए formulas what is slope So, अगर inclination given होता है तो slope क्या होता है sir inclination given है तो slope second formulas ठीक है okay m is sir, equal to tan theta okay tan 60 तो यहाँ second हो जाएगा tan 60 now yes what's the value 60 tan 60 is √3 yes sir, this answer okay sir। ठीक नोट कीजिए so कर लिया। okay our next topic is relation between the slope of two lines when now the first part is when the lines are parallel. So we'll draw a line. Suppose ये हमारे y-axis है, this is x-axis. ये हमारी first line है, this one is second line. ठीक है? This is L1, this is L2. ये हो गया θ1 and this is θ2. ठीक है? Now these two lines are parallel. Then can we say that θ1 is equal to θ2? yes sir, हम ये भी कह सकते हैं tan θ1 is equal to tan θ2. yes sir, So what is tan θ1? We can say m1 is equal to m2. yes sir। बस ये था ठीक है सो नोट कीजिए प्लीज the lines are parallel then their slope are equal ये याद रखिएगा इसको बाद में क्वेश्चंस में काफी यूज करेंगे किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए अदरवाइज वी विल मूव टू
नेक्स्ट किसी बच्चे को डाउट है? स्टार्ट करिए हम नेक्स्ट। ओके ठीक है इसमें नेक्स्ट इज व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस आर परपेंडिकुलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। सपोज एक लाइन हमारे पास ये है, इसको हम रब कर देते हैं। This first line, suppose this is our second line. These two are line at right angle. ठीक है, let this angle be theta 1, this angle be theta 2. अच्छा कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना है? 90. 90. ये एंगल कितना है? This one? सर 180 minus theta 2. 180 minus theta 2. Yes. ठीक है, वैसे डायरेक्टली भी आपके पास थ्योरम है, बट क्योंकि 10 को थोड़ा सा हमारा टाइम हो गया है, तो मे बी आप फॉर्मूलेस भूल गए होंगे, तो इसको डायरेक्टली करते हैं। नाउ थीटा 1 प्लस 90 प्लस 180 माइनस थीटा 2 कितना होगा? सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ 180 से 180. सो दिस टू 180 कैंसिल, तो कितना हो गया? थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, प्लस 90 इज इक्वल टू 0। Yes sir. सो हम ये कह सकते हैं 0, सो वी कैन से थीटा 2 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, थीटा 1 प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। नाउ m1 जो है दिस इज इक्वल टू tan थीटा 1, ठीक। m2 हमने ले लिया, दिस इज इक्वल टू tan थीटा 2। नाउ थीटा 2 वैल्यू इज थीटा 1 प्लस 90, सो वी कैन पुट ओवर हियर, ये हो जाएगा tan, दिस इज 90 प्लस थीटा 1, दिस इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 1 कितना हो जाएगा? tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? tan 90 प्लस थीटा, कोई बात नहीं, अभी ट्रू नहीं की है। tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? cot थीटा, ठीक है, और नेगेटिव साइन भी आता है इसमें, ठीक। 90 प्लस थीटा इज cot थीटा, और उसमें नेगेटिव साइन भी आता है। तो m1 ये आ गया हमारे पास, m2 हो गया माइनस cot थीटा 1। नाउ m1 इंटू m2 अगर हम करते हैं, m1 इंटू m2 का मतलब क्या हो जाएगा? tan थीटा 1 इंटू माइनस cot थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, इसको चेंज करते हैं cot को tan में, माइनस 1 बाई tan थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल, सो यू विल गेट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, just remember this, that m1 is equal to m2 is, sorry, m1 into m2 is equal to minus 1 when the two lines are perpendicular, और जब पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स बस याद रखिए, डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे, रिलेशन का यूज आ जाएगा किसी क्वेश्चन में, इसको नोट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। हाँ, प्रीवियस स्लाइड दिखानी है, प्रीवियस स्लाइड करनी है, हो गया. Yes, ठीक है। sir. तो बच्चे इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट, और जिनका हो गया वो फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस
बच्चे हो गया, स्टार्ट करें नेक्स्ट। यस ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें। अगर किसी का मिस हुआ तो प्लीज बता दिएगा। नेक्स्ट लाइन ये थी सर एक M1। सेकेंड, एक बार पीछे चले जाओ। ओके ओके बच्चे हो गया, स्टार्ट करें नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड ये थी आपकी M1 into M2 is equal to -1। अगर हो गया then we can start next। अगर नहीं हुआ है तो मुझे प्लीज बता दीजिए, otherwise we can start। हो Next गया is सर। okay, next is angle between two lines, angle between two lines having slope M1 and M2। Angle between two lines having slope M1 and M2। So suppose we have this, we have line 1 and we have another line। Okay. Suppose the angle between them is, let this be theta। First line का जो slope है that is M1, second line का जो slope है that is M2, and the angle between the lines is theta। So if we have to find the angle between the lines, then we will use this formula, tan of theta is equal to M2 minus M1 by 1 plus M1 M2। ठीक है, tan of theta is equal to M2 minus M1 by 1 plus M1 into M2। This is the angle between two lines। क्लियर हो? तो होगा क्या, आपको एग्जाम में पूछेगा कि the slope of first line is this, slope of second line is this, now find the angle between these two lines। So you can use this formula, tan of theta is equal to M2 minus M1 by 1 plus M1 into M2। ठीक है, please note down this। बच्चे जब नोट हो जाए तो बता दिएगा, हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर हो गया। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहीं अगर कोई मिक्स टाइप का आता है then we will use this formula। so formula हम ये कब यूज करेंगे, when we need to find the angle between the two lines and the slope is given। अगर slope given होता है तो मैं angle find कर रहा हूँ between two lines। ठीक, ये बच्चे फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज होगी that will be based on these formulas। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मुलेज होते हैं, ऑल द फॉर्मुलेज आर इंटर रिलेटेड। अगर सबके बीच में आपको रिलेशन समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज सेपरेटली आप फॉर्मूला यूज करेंगे और एज पर द क्वेश्चन हम उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम फॉर्मूला करते हैं पॉइंट, जस्ट फर्स्ट हम करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा कि सपोज वी हैव दिस लाइन। अब स्लोप तो आपको पता है, आपको इंटरसेप्ट नहीं पता। सो वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन। यहाँ जो
this is x, this is y. So this line L, this line is cutting and portion this on the y-axis. तो आपकी लाइन y-axis पे जो पोर्शन कट कर रही है that is called the C intercept. ठीक है, C है हमारा intercept और स्लोप आपको बताएगी स्लोप होता क्या है. ठीक है, and this line have the slope m. Intercept on y-axis. ये हमेशा याद रखिएगा that C is intercept on y-axis. So you have this equation y is equal to mx plus c. ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? When we have a slope m and we have an intercept c. When we have these two m and c, then we will use this formula y is equal to mx plus c. जल्दी से क्वेश्चन कर दीजिए. Please note down this formula and try this question. Find the equation of a line. Find the equation of a line having. Find the equation of a line having slope 1 and intercept on y-axis is 2. Please try this question. Sneha, बिल्कुल ठीक है आंसर. Y is equal to x plus 2. So answer is slope is 1 and c is 2. So we get this y is equal to x plus 2. Okay, then गुण प्रथम section solve हो गया. गुण प्रथम and section solve हुआ ये. Yes sir. Okay, so start करें next. किसी बच्चे को डाउट है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये. ओके, सी, बट याद रखिएगा सी इज एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, बट अगर वो इंटरसेप्ट दे रहा है ऑन एक्स एक्सिस, इफ स्लोप ऑफ लाइन, इफ स्लोप ऑफ लाइन एंड इंटरसेप्ट on x-axis is given, if slope of line and intercept on x-axis is given, then equation of line is y is equal to m x minus t. Intercept on y-axis d is given. ठीक है, हमने y इंटरसेप्ट पे जो इंटरसेप्ट था उसको हमने c लिया था. नाउ इन दिस केस x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसको हम d ले रहे हैं. अब आपको c गिवन नहीं है, आपको d गिवन है. फॉर एग्जांपल आपके पास है ये. ठीक, अब उसने आपको c नहीं दिया, उसने कहा कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज d एंड यू हैव अ स्लोप m. Then you have to use this formula y is equal to mx minus d. M is the slope, d is the intercept. In this case d is intercept on x axis. तो दोनों फॉर्मूलेस में प्लीज डिफरेंस देखिए. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो डिफरेंस देखिए. फर्स्ट में इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, सेकंड में इंटरसेप्ट है ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस. बच्चे कंप्लीट हो गया सबका? कंप्लीट हुआ बच्चे? Yes, sir. हाँ सर हो गया. ओके, सेकंड करते हैं फिर. सेकंड इज
point slope form. Second is point slope form. ठीक है, अब इक्वेशन का जो नाम है वहीं से हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन होगा. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा. ठीक है, इन दिस केस हमें एक x1 y1 गिवन होगा, point through which line is passing. M is slope of line. ठीक है, हमें एक पॉइंट गिवन होगा और हमें एक स्लोप गिवन होगा. So this line is passing suppose through this point x1 comma y1 and slope is given, slope is m. तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन इज दिस y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है, तो जब हमें एक पॉइंट गिवन होगा और हमें स्लोप गिवन होगा लाइन का, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला दैट y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? अगर डाउट है बच्चे तो प्लीज बताइए. सर ये फॉर्मूला है किस चीज का? ओके, गुड क्वेश्चन. अच्छा, ये फॉर्मूलेस हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी. आपको वो एक पॉइंट देगा, आपसे कहेगा योर लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और वो स्लोप देगा दैट द स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? ओके सर. Question is suppose find the equation of the line which is passing through 1, 2 and having slope 1. ठीक, इसको सॉल्व कीजिए. गुण, आपका जो क्वेश्चन था कि ये फॉर्मूला किसका है, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ऑल दीज वैल्यूज, टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन. स्नेहा का आंसर आ गया. आंसर इज y minus y1 is equal to 1 into x minus 1. So we get y minus 2 is equal to x minus 1. So it's mean x को यहाँ शिफ्ट कीजिए, y minus x is equal to 2 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, this will become 1. ठीक है गुण, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई. ठीक है, ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई which was passing through this 1, 2 और जिसका स्लोप 1 था. ठीक, उसने कंडीशन दे दी कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करी है एंड दिस हैव द स्लोप 1. तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर दी. क्लियर हुआ अपन? यस सर. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है ना. आप जैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे स्ट्रेट लाइन के 10th में, कैसे करते थे? एक्स और वाई आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट लेंगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी. उसने यहाँ क्या करा है, उसने लाइन दे दी. उसने कहा कि दिस इज द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप. तो हम यहाँ लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं और उस लाइन की कंडीशंस गिवन है. ठीक है, और भी किसी को डाउट है? क्योंकि बच्चे हम बहुत ज्यादा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. तो अगर आपके डाउट है, कुछ आपको कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए मुझे. सबका हो गया? सबका सेम आंसर है? गुड, सेम आंसर? यस सर. यस सर. ओके ओके, ठीक है, नोट करिए. स्टार्ट करें नेक्स्ट. अब डिफरेंट कंडीशंस गिवन होती है. जैसे अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें, देन इन फर्स्ट टाइप कंडीशन क्या थी? इंटरसेप्ट गिवन था, स्लोप गिवन था. सो दिस वाज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है जहां पे एक पॉइंट गिवन होता है एंड स्लोप इज गिवन. थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड हम करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, सो एज पर द नेम यहाँ क्या गिवन होगा? 2 पॉइंट फॉर्म. यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक,
So in this case, we have this line which is passing through this point, and second point is this. ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। मुझे कौन बताए गुण, व्हाट इज अ वन पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म? Sir, y minus y1 is equal to m into x minus x1. Okay. Now, if 2 points are given, then what is the slope? Slope हम कैसे find करते हैं if 2 points are given? Sir, y2 minus y1 upon m2 minus x1. x2 minus x1. So अब हम क्या करेंगे? Put this value of m. Put value of m. Put value of m in first. First में put कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा? y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 y1 कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, x2 y2 कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि स्लोप फाइंड किया, 1 पॉइंट फॉर्म में पुट कर दिया, बट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन करते हैं इसको, प्लीज बच्चे जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, ओके, देन ट्राई दिस क्वेश्चन, मुझे आंसर। ओके, स्नेहा इसको ना फिर फर्दर और सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, मतलब सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट होने चाहिए आपके पास। वेरिएबल लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिएगा, कांस्टेंट को प्लीज शिफ्ट टू राइट साइड। Okay, so गुण का फाइनल आंसर आ गया, फाइनल इज y minus 3x is equal to -4। बिल्कुल ठीक है, इसमें हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर। प्रथम सेक्शन प्लीज बताएंगे व्हाट इज योर आंसर? इसमें 4 की जगह 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, ओके चेक करते हैं। So y minus y1
यानी y प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू y2 माइनस y1 5 माइनस प्लस 1 हो गया बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 1 हो गया इंटू x माइनस x1 x माइनस 1 हो गया तो ये हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 x माइनस 1 so y plus 1 is equal to 3 होगा ब्रैकेट ओपन कर देंगे 3x minus 3 तो y minus 3x is equal to minus 4 यस सर गलती पता चल गई कहाँ करी है ओके ओके ठीक है ठीक सो आई गेस सबने नोट कर लिया ये हमारा थर्ड टाइप हो गया देन वी विल स्टार्ट द फोर्थ टाइप फोर्थ इज इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा गुड इंटरसेप्ट क्या होता है सर ओरिजिन से जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन वहाँ देखिए इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ क्या है कि आपकी लाइन x और y एक्सिस पे x एंड y एक्सिस पे जो पोर्शन कट कर रहा है दैट इज द इंटरसेप्ट ठीक है लाइन x एंड y एक्सिस पे जो भी पोर्शन कट कर रहा है दैट इज इंटरसेप्ट तो यहाँ ये था ये था a एंड दिस इज b सो a है हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और b है हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस सर हम इनमें C और D नहीं ले सकते सी एंड कुछ भी ले सकते हैं आप बट बच्चे आपको जो बुक्स में फॉर्मूलेस मिलेंगे वो ए बी है तो हम अभी तो ले सकते हैं हमें तो कोई इशू नहीं है बट जब आप बुक से कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा ओके मतलब चेंज ये होगा कि वेरिएबल आप दूसरे ले रहे हैं तो टीचर भी आपके कंफ्यूज होंगे सो दिस इज x by a plus y by b is equal to 1 this is the formula कि when intercept on x and y axis is given intercept का मतलब वो कितना पोर्शन कट कर रहा है x और y एक्सिस पे अगर वो गिवन है देन आवर फॉर्मूला इज x by a plus y by b is equal to 1 बस इतना करना है फॉर्मूला जस्ट पुट करना है एलसीएम लेके शिफ्ट कर देना है दैट विल बी योर आंसर so try this question find the equation of the line and the equation of the line which makes intercepts minus 3 and 2 on the x and y axis respectively आपको इंटरसेप्ट दे दिया उसने find the equation of the line please try this ओके गुण का आंसर आ गया आंसर इज 2x minus 3y is equal to minus 6 बिल्कुल ठीक है दिस इज द करेक्ट आंसर स्नेहा का भी आंसर आ गया सर मेरा भी सेम है बिल्कुल ठीक है ओके ठीक है सो आई गेस ये भी आपको क्लियर है इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम सबने नोट कर लिया ना जो अगर किसी ने नहीं किया तो प्लीज बता दिए 4 टाइप्स हो गई हमारी नेक्स्ट इज फिफ्थ इज नॉर्मल फॉर्म ठीक नॉर्मल फॉर्म क्या होगी suppose we have a line this
दिस लाइन हमने क्या किया, हमने ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर and let the distance, ये perpendicular ड्रॉ किया, तो origin and let this be n, तो जो distance है that is p, और ये जो perpendicular है this is making an angle alpha with the positive direction of x-axis. ठीक है, we have to find the equation of this straight line. Given क्या है, origin से एक perpendicular given है जिसका distance है आपके पास, alpha given है, alpha is the angle which this perpendicular is making with a positive x direction. Line नहीं, perpendicular. So p क्या है? P is perpendicular distance. P is perpendicular distance. Perpendicular distance between origin and line. Between origin and line. ठीक है, P is a perpendicular distance between origin and line. उसके बाद alpha जो perpendicular है that is making an angle alpha with a positive x direction. तो equation जो होती है, equation हो जाती है आपकी x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. This is the equation. X cos alpha y sin alpha is equal to p. तो यहाँ याद रखना है alpha क्या है, जो perpendicular draw किया है, that perpendicular is making an angle alpha with a positive x direction, and what is p? It is the distance between the origin and the line. So this is the normal form. Clear was आपको? सबको clear हुआ, किसी को doubt तो नहीं है? No, sir. Okay, please note down this. और एक question करते हैं. Did you try this question? ओके, इसमें का आंसर आ गया √3x बिल्कुल ठीक है प्लस y बिल्कुल ठीक है इज इक्वल टू 8 बिल्कुल ठीक है इसमें बिल्कुल ठीक है कौन प्रथम एंड सेक्शन आंसर
प्रथम एंड सेक्शन डाउट है तो मुझे बताइए। ओके ठीक है सर सेक्शन। डाउट नहीं है, आ गया तो यही आ रहा है आंसर। ओके ओके ओके। तो मुझे अब हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज। ठीक, थर्ड अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, उसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। उसमें आपके 3 + 2 5 टाइप्स। ठीक है, उसको जल्दी से कर लेते हैं, दिस चैप्टर इज कंप्लीट कर। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो हम पहले कर चुके हैं। हमने जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड की, अब वो क्या करेगा, वो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे देगा, सॉरी वो आपको इक्वेशन दे देगा और रिवर्स पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि फाइंड द इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जांपल। सर एक जी बार पिछली स्लाइड वापस दिखा सकते हो, मैंने वो क्वेश्चन नोट नहीं किया था पूरा। ओके। ये सर हो गया। ओके, क्वेश्चन नोट करते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and the y-intercepts. First is x plus 7y is equal to 0. Second is 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. And third is y is equal to 0. Okay. इसको solve करते हैं. Reduce the following into slope intercept form. So first thing, Gun, what is slope intercept form? So y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. So हमें क्या करना है? We have to change the question in this form. Form क्या है? Left side में y होना चाहिए, right side में सारी terms shift करनी है. So we have this x plus 7y is equal to 0. फिर हमने क्या किया? X shift किया, उसके minus x हो गया. फिर हमने क्या किया? उसको 7 को भी shift कर दिया, plus 7 plus c. Now compare this with this one, y is equal to mx plus c. So Sneha, in this case, what is m? M क्या होगा if we compare, ये 0 था. If we compare these two, इन दोनों को अगर हम compare करें, then what is m? बिल्कुल ठीक है इसमें, m is -1/7. And what is c? c is 0. So for this question उसने क्या पूछा था? उसने कहा था find the slope and y-intercept. तो slope कितना आ गया? -1/7. Intercept कितना आ गया? 0. So method clear हुआ. First we have to write the formula, then we have to change the question in this form. सारी टर्म्स को राइट साइड रखना है, लेफ्ट में से y होना चाहिए. किसको डाउट है इसमें, ये बताइए प्लीज. अगर नहीं है then tell me the answer of second. So m2 and c minus 5. m2 आ रहा है. ओके, m -2 नहीं आ रहा. Yes sir, -2. -2. ओके बिल्कुल ठीक है. एंड c कितना है? इसने हाँ बिल्कुल ठीक है आपका आंसर. c कितना है? So c -5. -5. ये 5/3. ये नेगेटिव था ना, वहां जाके पॉजिटिव होगा.
क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके ओके, अब स्नेहा बिल्कुल ठीक था आंसर. नाउ टेल मी थर्ड वन. सर थर्ड में m भी 0 है और c भी 0 है. बिल्कुल ठीक है. m is 0 and c is also 0. ठीक है. स्नेहा क्लियर हो गया प्रथम सेक्शन? एनी डाउट? नो डाउट सर। ओके, स्नेहा क्लियर हुआ थर्ड वन? ओके ठीक है. सो ये था हमारा फर्स्ट टाइप. नाउ 4 टाइप्स ही रह गए हैं बस. ये भी बिल्कुल सिंपल है. सेकेंड टाइप इज reduce the following. ओके अब ये देखते हैं ये कौन सा फॉर्म है. इंडसिव फॉर्म. सो प्रथम व्हाट इज इंडसिव फॉर्म? व्हाट इज द इंडसिव फॉर्म? गुण. Sir, x by a plus y by b is equal to 1. बिल्कुल ठीक है. x by a plus y by b is equal to 1. This is the intercept form. So in first case, we have this question 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. So अगर हम standard equation से compare करते हैं, then x भी है, y भी है, but in the rightmost side we have a 1. So it's mean हमें करना क्या है? We have to shift the constant always to the right side, and we have to make the right side 1. So first thing हम क्या कर रहे हैं? 3x plus 2y is equal to 12. Now स्नेहा हमें यहाँ 1 चाहिए, तो कैसे करेंगे हम? Let this be first equation. Now in this equation to the rightmost side we need 1. कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है. डिवाइड कंप्लीट बाय 12. तो कितना हो गया ये? इसको सेपरेट कर देंगे. 3x by 12 प्लस 2y by 12 is equal to 1. तो ये कितना हो जाएगा? x by 4 प्लस y by 6 is equal to 1. Now a क्या हो जाएगा फिर? a is equal to what, Sneha? a is 4 and what is b? b is 6. ये इंटरसेप्ट है. Clear हुआ सबको? So what we have to do first, we have to shift the constant to the right side, then make the right side unity. I guess आगे होगा समझ में. मुझे जल्दी से इनके सेकंड एंड थर्ड के आंसर बता दीजिए. फर्स्ट टेल मी द आंसर ऑफ सेकंड वन. नहीं स्नेहा, नॉट करेक्ट. नहीं नहीं नहीं. बी बी भी ठीक नहीं है, ए भी ठीक नहीं है. और मुझे प्लीज बताएंगे व्हाट इज आंसर?
ओके, गुण का आंसर आ गया। आंसर इज स्नैप। ठीक है, देखिए करना कैसे, 4x माइनस 3y 6 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो 4 है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं बाय 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/2, 3/2, और ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 2। सो a इज इक्वल टू 3/2 एंड b इज इक्वल टू -2। ठीक है, स्नेहा क्लियर हो? 3/2 होगा और 2/3। प्रथम क्लियर हुआ ये? स्नेहा अब समझ में आया? ओके ओके ओके, 3 यहाँ के 4x/6 minus 3y/6 is equal to 1 हो गया। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कि जब डिवाइड होता है तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, सो इट्स मीन अगर हमारे पास x into 4/6 है, दिस कैन बी रिटन एज x divided by 6/4, which is what, x by 6/4। ठीक है स्नेहा, इसको हमने यहाँ क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि हमारी एज पर द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो x होना चाहिए, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई इसको हमने शिफ्ट किया। ठीक, ओके, अब मुझे बताइए थर्ड का आंसर। ओके, थर्ड का गुण का आंसर आ गया 3y इज इक्वल टू -2, तो y बाय -2/3 प्लस, ठीक है, देयर इज नथिंग इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ गया दिस वन b इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो 0 में कुछ भी नहीं। ठीक है, मिक्स करते हैं फिर। तो सर हम थर्ड वाले में एक का इंटरसेप्ट 0 होएगा। सर जी बच्चे, थर्ड वाले में इंटरसेप्ट होगा नहीं ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमें क्लियर पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू -2/3। तो -2/3 कहाँ होता है, लाइक दिस, यहाँ हो गया 0, -2/3। सो y इज इक्वल टू -2/3 कैसी लाइन होती है, दिस पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कितना होगा, y पे कितना पोर्शन कट कर रहा है ये, -2/3, और x पे कितना कट कर रहा है पोर्शन, 0। no intercept on x axis, no intercept on x axis, 0 नहीं कहेंगे, no intercept on x axis। ठीक है, x axis को कट कर ही नहीं है। अगर यहां से पास होता लाइक दिस, यहां हम कहते हैं कि x इंटरसेप्ट भी 0 है, y इंटरसेप्ट भी 0 है। ठीक है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सो नो इंटरसेप्ट ऑन x axis। ठीक है, क्लियर हो सबको? यस सर। ओके, एनी डाउट यहाँ तक, ये क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर गुण एंड स्नेहा, बस आप दोनों ही, ठीक है,
प्रथम एंड सेक्शन नहीं है. So any doubt in this? No, sir. Okay. So next is, ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज, ओके इसने इतना ही करना है. ठीक ठीक है, फिर इतना ही करते हैं. गुण ऐसा कीजिए, अभी तक जितना किया मैं होमवर्क देता हूँ, इसको प्लीज कंप्लीट कीजिए. कल फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है गुण, कोई इशू तो नहीं है? Okay, क्योंकि sir. No, और भी sir. बच्चे नहीं है, इसमें अभी अभी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं. सो एक्सरसाइज 10.1 इज होमवर्क, 10.2 इज होमवर्क, 10.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर सकते हैं, आप सेकंड कर सकते हैं, बस ये दोनों अभी, प्लस मिसलेनियस ट्राई कीजिए. बट प्लीज बच्चे क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा. ओके हाँ, Okay, कल sir. कल थोड़ा सा हाँ मॉर्निंग में जल्दी करें क्लास. कल मॉर्निंग में 9:30 करें, क्योंकि हमें काफी Sir, क्वेश्चन. कल मेरा एग्जाम है. कल कौन सा? कंप्यूटर. टाइमिंग्स? Sir, 8 to 11:40. 8 to 11:40. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं गुण आपका? सर मैथ्स में जी. एक सेकेंड. ओके ओके, इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं? नो सर, नहीं आ रहे. नहीं आ रहा इसमें आप? ओके आ रहे हैं. आई गेस प्रथम और उनका सेक्शन का भी आ रहा है. फिर ऐसे करते हैं गुण, ट्यूसडे तो एग्जाम नहीं है आपका? नो सर. ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, कल हम कॉम्प्लेक्स ठीक है कंप्लीट कर सर. लेंगे, फिर ट्यूसडे आप जब ज्वाइन करेंगे तो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. ओके सर. ठीक है, ओके. सो स्नेहा टुमारो 9:30 मॉर्निंग. ठीक, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.